Recording is on. Okay, perfect. Now, here is an article from the Indian Express. Something that I kind of vouch for, and something that I always tell you that कि यार ये एक चीज है जो आप कर लो. Indian Express बड़ी बड़ी प्यारी आर्टिकल आती है. पहली बात, why am I taking this article? Why am I taking this article? The reason I'm taking this article because it is one of the type that CAT, ZAT, CMAT, SNAP, NMAT, IFT are keen on asking. Okay, these guys are keen on asking. Okay, so this is one of the type. Now, when I tell you this, right, your trigger should be, ठीक है, कुछ तो मिल गया मेरे को. I got something now. That should be the first point. Sir took the RC or an article which is in line with CAT and other exams. Okay, that's going to be your note making. ये article करा था. Now, let me understand what type of articles are taken by CAT, ZAT, blah, blah, blah. So eventually in the process, I'll be telling you the reasons why CAT takes this kind of thing, right? So we'll talk about that. So that's going to be the first point that you need to write it down. So if I were you and preparing for CAT, right? This is the exact way I will make my notes. तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो करना, एंड में मैं आपका फीडबैक लूंगा जब अपना लेक्चर खत्म होगा. That's number one. Now what is this article about? Number one, it's a current affair. Number one, it's a current affair, right? And it talks about, because for the fact I have already read it a little bit, so I'm telling you. So why it has a good chance to come in the newspaper? Sorry, come in the CAT or ZAT or any other exam for that matter. I'm not saying that it is going to be there in CAT for sure. I'm saying that it's a good article for competitive exams for MBA. What makes it so good, right? Number one, it's a current affair. Number two, it talks about something which is happening currently, right? Which is very, very much close to Corona and COVID and blah, 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 right? So as a paper setter, I would definitely want to have at least one reading comprehension which is based on the current affairs, right? See, because guys, if you sort of look out for the entire transition of CAT earlier, if you go back to 2006, which was the toughest reading comprehension, I would say. Even today, when I take up that reading comprehension and try to solve it, I still feel that heat, because 2006 wala paper was very, very, very bad. 2006 पकड़ो, 7 पकड़ो. So 2008 से CAT मेरे ख्याल से online हो गया और उसके बाद papers मिलना बंद हो गया. But about 2006 वाला reading comprehension, it was very heavy. Earlier CAT was predominantly known for asking you mythology, psychology, philosophy, very much heavy chapters, like novel kind of things, fiction, non-fiction kind of things. And that's where, if you look at CAT VARC older, it's a pain in ass, to be very honest. But now, from last 6, 7, 8 years, I would say, there has been a paradigm shift in CAT reading comprehension. They're getting onto more realistic view. They're getting more onto current affairs. They're getting more onto what's happening in the market currently, right? So just to give you an example, from 2017 article, there was a paragraph based on the iPhone, right? In 2017, there was a paragraph based on the iPhone, which got published in the month of July or August 2017. And the iPhone passage came in CAT 2017, because that point in time, it was a buzz about iPhone 10, because that was like, the new kind of a thing, that came into market and blah, blah, blah. तो वो एक थोड़ा बस था 2017 के टाइम पे, जहां पे हम iPhone 10 के बारे में बात करें. तो वो कैसा था, वो एक करंट अफेयर था. It wasn't a hot shot kind of a hot cake kind of a topic. So they adopted that. So from that perspective, I'm saying that it's good to do these kind of articles, right? Number one, that answers, right? Number two, it's easy to comprehend and it's easy to understand, right? Number two, it's easy to comprehend and easy to understand. Also, it is driven by data, a lot of data, right? So it becomes a little bit lengthy for students to read it, because जब डेटा होता है तब हमें ये नहीं पता होता कि डेटा अगर आया है तो पढ़ना कैसे है, डेटा को देखना है कि डेटा को छोड़ना है, ये हमें नहीं पता चलता. This is what we will be covering today actually. So let's go ahead. And in pandemic past, it has shown some places surprises in the efforts to promote India's digital journey. ठीक है, इसको निकाल सकते हैं आप. Okay, इसको निकाल सकते हो, इस लाइन को निकाल सकते हो. Okay. It turns out that India overtook China to register the highest number of countrywide digital payments. Okay, great. Real-time transactions crossed 25 billion. You know what? Now, the moment I start with my reading comprehension,
this is where I can definitely understand the topic of this entire reading comprehension. That the topic is India has surpassed China or overtook China as far as the digital payments are concerned. The users who are using the digital payments method is concerned, right? India has overtaken China. It's a no-brainer. It's a no-brainer for a CAT aspirant. If you are doing this in your mock, if you're doing this in your D-Day, in your CAT exam on D-Day, if you're doing this, it's a no-brainer because this is kind of a topic which gets blocked when it starts actually, right? So it's a no-brainer. Like ये block हो गया. Block का मतलब क्या है? मुझे opening में ही पता चल गया कि what this entire reading competition is going to be all about. So if you just give it a thought, this is going to be India overtaking China. So these guys will be talking a lot about Indian market. How India did that? What helped India to overtake China? Because China is giant. China is giant in as far as digital markets are concerned. As far as digital payment market is concerned, right? Then you have Singapore and all that. Like Singapore is around about 67, 68%. More than that. I think it's close to 80% what these guys are using digital payments. So now we can understand okay, it's a positive sort of a reading comprehension. It will talk about India, how it did, why it did, supporting function, X, Y, Z. It's a no-brainer. It's a no-brainer. The other thing that you need to understand, which we will be seeing, literally we will be seeing, is some of the CAT, ZAT, MAT, NMAT, CMAT sort of reading comprehensions. Whenever you have two entities been talked about. So here you have India and China. You might have mythology where it talks about Pandavas and Kauravas, right? Whatever, right? It can be anything, right? Maybe you have an iPhone and a Samsung. Maybe you have Steve Jobs and Bill Gates, right? So any reading comprehension which has two entities involved, you should be taking them immediately because it gives you a clear-cut shot, right? It gives you a very clear-cut shot because आपको पता है question किसके ऊपर आएगा, India के ऊपर आएगा या फिर China के ऊपर आएगा, बात खत्म, right? So when you have two entities, always and always vouch for these kind of articles, vouch for these kind of reading comprehensions on a DD or maybe mock के लिए. This is something you need to understand. So that's going to be a point that you need to make a note now, right? दूसरी बात, it's a positive passage. So जो मेरे questions होंगे वो भी थोड़ी easy होंगे. If I just glance through, right? If I just glance through, I see a lot of data out here. Having data is good sometimes, but having data is bad also at times, which I will be explaining a little bit later. If I miss on that point, kindly kind of just tell me, give me a buzz कि sir data कैसे negative में impact करता है, आपको बताने वाले थे, right? So I'm very much clear यहाँ पे that I want to take this RC because ये positive है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, दो entity के बारे में बात करा होगा, straightforward होगा. Now, why you are saying that we should be taking reading comprehension wherein we talk about two entities? The reason is that because it's going to be comparison. It's a no-brainer. It's a no-brainer. If I talk about Sita and Gita, I'm not going to talk about Mita or Anita or Nita, right? I'm only going to talk about Sita and Gita, and I will be doing the characteristic comparison of Sita and Gita. So as an author, मेरा boundary बन गया. As an author, मेरा boundary बन गया कि मेरे को इसके ऊपर ही बात करना है. Now when you have topics which are like, you know, which are like tail topic. Tail मतलब एक पूंछ के होता है. बंदर की वाली पूंछ होती है, वो पूंछ बढ़ती जाती है, राइट? पता नहीं चलता है कहां पे जाके खत्म होगा. फिक्शन वाला टॉपिक, नॉवेल वाला टॉपिक, वो एक चीज will lead to another. Second thing will lead to third thing will lead to fourth, and you will get kind of, you know, lost in this kind of reading comprehension. Sort of an inception. Should never take those kind of topics when you begin with your reading comprehension. Always remember that, right? So comparison वाला RC आपको पहले उठाना है. Very smooth. And I'll prove it to you. See, because nobody creates those reading comprehension. I mean, reading comprehension is an output of giving you an article from the newspaper, magazine, Aeon, The Hindu, Indian Express, whatsoever. So what these guys do is basically they kind of, you know, mix and match. They'll kind of, you know, take out one paragraph, or probably they'll take first and the last, kind of, you know, punch in, punch out, something like that. So they don't write it by themselves and create reading comprehension out of it. They basically do it by the information which is provided there on the social media, period. So इतना दिमाग नहीं लगाना है. And that is the reason, if you look at from this perspective, reading comprehension बहुत ज़्यादा easy आपको लगेगा, right? And we will be doing these kind of things a little bit later. Now, it turns out that India over to China to register the highest number of countrywide digital payments. Highest number of countrywide digital payments. If I'm smart, I should understand that the next thing that I am going to get into is the data. The next thing that I'm going to get into is data. Highest number of countrywide digital payments. Author ने बोल दिया, India ने China को take over कर लिया, किसमें highest number of countrywide digital payments.
अब कितना है हाईएस्ट वो बात करना जरूरी है। वो अगर नेक्स्ट लाइन में नहीं आया तो थर्ड या फोर्थ लाइन में आना शॉर्ट है, बिकॉज वो एक टॉपिक है। बिना वो बताए मैं कंक्लूड नहीं कर सकता कि इंडिया ने चाइना को ओवरटेक किया है। अगर मैं कोई कंक्लूजन देता हूं, इट्स अ कंक्लूजन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, it's a statement, you can say it's a statement, by the way, right? So when I say a statement, I have to have a supporting kind of a statement to back it up. तो आगे अगर आप पढ़ोगे, real time transactions cross 45 billion, much higher than China's 15 billion. It's like a Sita Gita ka example, right? Comparison, tuck, right? As reported in the analysis report of Asia worldwide, the report also stated that digital payments in India are set to account for like 71.7% of all payments by volume by the year 2025. That's good. 71.7% is what they are looking at. ये डेटा आया, ठीक है, खत्म, आगे चलेंगे. Dash survey showed. अब you know what kind of mistakes that you guys will be doing while you read. Comment करना if you agree with me. YouGov, अच्छा ये क्या है? तुम लोग यहाँ पे भटक जाओगे, तुम लोग यहाँ पे भटक जाओगे, ये क्या चीज है? फिर तुम इसको गूगल करोगे, ये समझोगे. डोंट डू दैट. एनी सर्वे whatever it is, you should not read that. You should not read that. ACI worldwide, you कह रहा ठीक है, ACI worldwide को है, अपने को नहीं फर्क पड़ता. I care damn you, I care fuck about it. मुझे देखो, मैं बोला ना आएगा. So I just want to know the survey. Okay, I just want to know the survey. ठीक है. Does it really matter who has done the survey? No, it doesn't matter. Is that a topic? No, it's not a topic. It's not a topic. Now understand this. If the first line says, according to ACI worldwide, according to ACI worldwide, who claims that India overtook China in digital payment, then it matters that who the hell is ACI worldwide, because author is actually bringing them into attention. Author is sort of focusing on them. So it matters to understand who's ACI. Come on. It's logic. An article cannot be written just on one survey. No brainer. Why as a writer, I would introduce ACI worldwide. Yeah, if I want to screw them up because they have not done a good job, I'll write about them. But again, I will be critical about them. But it's not about ACI. I mean, like, what things they did not do well, the topic is about that. So now when we read these things, you need to give an importance to only those things which matters to you. And I tell you, when you do this at home or when you do this on a D-Day, you will always poke your nose in the information which has no bloody relevance to your reading comprehension. Now you will think about, अच्छा, who is ACI worldwide, something like that. YouGov, इसको pronounce कैसे कराया जाता है? अच्छा, इसका pronunciation क्या होगा? अच्छा, इस vocabulary का मतलब क्या होगा? ये word का vocab क्या होगा? Blah 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 blah, all that stuff. Then you will open new window, then you will copy paste it. फिर वो window तुम्हें और कहीं लेके जाएगा. तो बेटा जाते थे जापान पहुंच गए चीन. Should never do that. Got to be very focused. That I am reading an article. My funda to read an article is extract information. I'm not going to be pronouncing YouGov. I care damn about the survey. There is a survey, clear-cut, period. What survey says? 67% urban Indian women responding to the survey use digital modes of payment on a general basis. That's a very good thing, by the way. The reason, I love these kind of reading comprehensions. The reason. What a great author. He's giving you a question and he's giving you a solution also. Understand this. I started from here. मैं यहाँ तक आया. मैंने पढ़ा. इधर मेरे को the reason मिला. Now I want to ask you a question. Convenience of use, which interestingly overtook cashbacks and promotional offers. This convenience has been felt even more during the COVID pandemic. Does this line
does this line answer reading speed? यार सिंपल सी बात है ना, मेरे को अगर if I were you मैं इतना पढ़ के खत्म, आगे मैं देखता ही नहीं, बिकॉज मेरे को पता है आगे डेटा है, नंबर है, वो आगे बताएगा इतने से बड़ा उतने से बड़ा, आई केयर फक अबाउट इट। मेरे को रीजन चाहिए क्यों हुआ। रीजन ये है, इंडिया ने चाइना को सरपास इसलिए किया बिकॉज पैंडेमिक यहाँ पे आया, ज्यादा दिन यहाँ पे रुका, यहाँ पे डिजिटल मीडिया, यहाँ पे ऑलरेडी डिजिटल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पैंडेमिक में लोगों को एक कन्वीनियंस आ गया कि भाई मैं डिजिटल पेमेंट कर दूं, और चलते चलते हमने देखा मैक्सिमम पॉपुलेशन यूज करा। सुनो मेरी बात, मैक्सिमम पॉपुलेशन यूज करा, उसकी वजह से हम इंडिया ने चाइना को बीट किया। पॉइंट नंबर 1 क्या है, इंडिया बीट्स चाइना इन डिजिटल पेमेंट। उसका सपोर्टिंग क्या है, बिकॉज पैंडेमिक आया तो कन्वीनियंस हुआ। इज दैट द फाइनल आंसर? नो, उसका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। इंडिया को कन्वीनियंट बना, ठीक है, पैंडेमिक आया, इंडिया में कन्वीनियंस हो गया, अपने पैंडेमिक में डिजिटल पेमेंट करे, बट डिजिटल पेमेंट स्टार्ट कहां से हुआ, उसका रीजन क्या है, वो आगे जाके आपको मिलेगा। गाइस आपको समझ रहा है, एक एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। गाइस आर यू विद मी? अब जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको यह पता चलेगा कि यार एक्चुअल में डिजिटल पेमेंट इंडिया में आया क्यों। अब तुम बताओ इंडिया में क्यों आया डिजिटल पेमेंट, क्यों लोगों ने कन्वीनियंटली कर लिया, आप एक थोड़ा सा एक आइडिया लगा देना। एनीवे मूविंग अहेड, शुड आई रीड दिस? कोई जरूरत नहीं है, आगे चलो। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, यूपीआई ऑन हर मोबाइल, ठीक है, यूजिंग हर फोन, ठीक है, मोर एंड मोर पीपल, ठीक है। The digital payment boom is indicative of a large, okay, the digital payment boom, this is something related to your main idea, not main idea exactly, but this is something to do with your opening of the reading comprehension or opening of the article. सर आपने ये क्यों नहीं पढ़ा, कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट? यार मुझे ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो क्या बोल रहा है, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, हाउस होल्ड, ठीक है ना। अब तुझे यहाँ तक पता चला रीजन क्या है, ये छोड़ दो, इसको पढ़ो मत, खाली ओपनिंग का फंडा लगा दो। ओपनिंग में क्या बोलता था, डिजिटल पेमेंट बूम, he started saying that India overtook China in the digital payment. Now he's talking about India, now he's talking about digital payment ka boom, right? So when he's talking about digital payment ka boom, this is where you should halt and read थोड़ा बहुत अच्छे से। पैराडिम शिफ्ट मतलब एक गजब का शिफ्ट, या फिर जो एक्सपेक्टेड नहीं था, भारी भरकम सब नहीं था, राइट? इन द ईज ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, much of this is a result of nudges and diligent policy and technology framework created by the central government in last few years. What did I tell you? What did I tell you? See, it's a simple thing, but थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दिखाया। सीधा बोल देता डिजिटल इंडिया के बारे में, वहां पे बात खत्म हो जाती। By giving unique digital identity आधार to 124 करोड़, छोड़ दो जो भी है, blah 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 stuff, right? जनधन आधार मोबाइल, जैम, यूनिवर्सल पेमेंट, यूपीआई, that's okay. आगे चलेंगे। द प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज एडेड 42.4 करोड़ बैंक अकाउंट्स, टक टक टक, ठीक है, ओवर 23.5 करोड़, ठीक है, ठीक है। द एम्बिशियस जैम ट्रिनिटी, दैट्स ओके। आई डोंट हैव टू रीड नाउ बिकॉज मुझे यहाँ पे एक समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई, इंडिया ने चाइना को सरपास किया, ग्रेट। क्यों किया? डिजिटल पेमेंट, ठीक है, क्यों किया? बिकॉज कोरोना था, वो एक कन्वीनियंस बन गया, वेरी गुड। बूम क्यों आया? उसका रीजन। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया था डिजिटल इंडिया का, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बारे में बात करेंगे। मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज आई नो इट, इट्स अ करंट अफेयर, आई नो इट, राइट? आई कैन मूव इट, बट आई एम गोना होल्ड ऑन टू दिस। व्हाई यू डोंट हैव टू डू दिस, राइट? आगे चलेंगे। यूनिवर्सल पेमेंट पता है हमको, द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, ठीक है, जैम वी नो इट, राइट? क्या पढ़ने लायक है यहाँ पे? नथिंग। द ट्रिनिटी आल्सो हेल्प्ड एलिमिनेशन मिडिल मैन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, this is important. So look at the data ka point, hold on to it. Aage chalenge, the trinity, which is mentioned out here, right? The earlier unresponsive system was now able to reach and it is the challenges of delivering a common man in a short, comprehensive manner. Okay, this story is truly unmissable. Very good. The numbers speak for themselves. It's an important thing. Moving ahead, even as critics point to increase cash circulation, it is plausible that the withdrawal of DBT funds, we don't know what a DBT fund, we don't want to get into that nitty-gritties, a significant reason for the increased cash circulation, particularly in the rural economy. That's okay. The aid that reached people during the pandemic under PM Garib Kalyan, blah blah blah, blah blah blah. Trinity मतलब three, Trio Trinity, Holy Trinity मतलब क्या? Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, 3 colleges, right?
तो लोग होंगे तो ट्रायो, कुछ इंस्टीट्यूशंस होगा तो ट्रिनिटी के बारे में बात होती है. सो दैट्स हाउ दे कॉल इट ट्रिनिटी, राइट? मूविंग अहेड. ओके, क्या बोला है? सच मैसिव इंस्टेंसेस कैश ट्रांसफर टू पीपल लिविंग इन फार. ठीक है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे इन्होंने कैश ट्रांसफर के बारे में बात करी है, सच मैसिव ऊपर के बारे में बात कर रहा है, छोड़ दो. Amidst massive criticism and opposition, it was Prime Minister Modi's unwavering push to build the digital infrastructure of Aadhaar and JAM that is now. इसको आप अशरिंग बोल सकते हैं, यूशरिंग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. यूशर का मतलब क्या होता है? यूशर या फिर अशर का मतलब क्या होता है? तुम कभी अगर सिनेमा हॉल में जाते हो, राइट, वहां पे एक बंदा होता है जो टॉर्च मार के आपको अपनी सीट दिखाता है, उस बंदे को कहा जाता है यूशर बेसिकली, राइट? तो ये मोदी को एक मेटाफोरिकल वे में बोल रहे हैं कि Modi was the person who showed that way to the country, India, blah blah blah, जो भी, right? Now let's go down, right? It's called as उपमा. It's called as किसी चीज के साथ कनेक्ट करके बात करना. Not exactly. Now you can't say that he's the guy who was the torch, but it's basically किसी चीज का एग्जांपल देके बात करना. That's what is called as metaphor. I hope that's clear. ओके, आगे चलेंगे. ठीक है, ये समझ गया. इट वुड डू वेल फॉर क्रिटिक्स टू इंट्रोस्पेक्ट. नाउ सी हियर यू कैन सी योर आर्टिकल इज नाउ चेंजिंग. सर अब एक बात बताना, आपने इतना भगाया क्यों, राइट? आप जब पढ़ रहे थे आपने ये सब भगाया क्यों? देखो सिंपल सी बात है. पहली चीज, मुझे पता है मैं क्या पढ़ रहा हूं. पहली बात, मुझे पता है कि ये आर्टिकल बात करता है इंडिया डूइंग वेरी वेल over and above China because of digital payments. Convenience है, pandemic है, जनधन में accounts खुले, digital India हो गया, blah blah blah. I don't really have to get into the nitty gritty of data. Understand this. In your reading comprehension, कोई भी बंदा आपका reading comprehension set करे, कोई भी faculty आपका reading comprehension set करे, कोई भी mock हो, कुछ क्लासेस के mock थोड़े ज्यादा टफ होते हैं, उनको छोड़ के अगर मैं CAT के actual लेवल पे बात करूंगा, आपके दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. एक होता है आपका फैक्ट बेस्ड, एक होता है आपका इन्फ्रेंस बेस्ड. ठीक है, और भी टाइप्स हैं जो हम बाद में बात करेंगे. अब देखो कैट की जो लेवल है वो थोड़ी हाई लेवल है. तो कैट में तो सिंपल सी बात है, तुमको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. इन द पास्ट 1 year alone how much money was transferred, how many lakhs were transferred. Come on, ये नहीं आएगा. Are you guys with me? So CAT will never ask you a question something like this. They'll not ask you something like रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, रिकामा जागा भरा. ऐसा नहीं बोलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो in the year alone. ये मिस कर दिया. बोला fill in the blank. ये भी नहीं आएगा. एक चीज कभी भी याद रखना, जब डेटा आता है ना आपके पैराग्राफ में भर के, they don't ask you question directly on the data. They ask you question which would need you to infer from the data. Are you with me? So they'll not ask you question directly on the data. They want you to read the data, infer and answer. So the question that you will see and the options that you will be seeing, those options are going to be inference based, not exactly, but data पढ़ने के बाद तुमको क्या समझा वो उस लाइन में आएगा, और उस लाइन में एक भी नंबर नहीं आएगा. चारों के चार ऑप्शन purely verbal without a number in it. So you have to read the data, understand the data. On that basis, you need to kind of mark those options. Now, it's a choice that you have to make on the D-Day or when you write a mock. कि भाई मैं डेटा पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा. If I were you, मैं सिंपल खेल खेलूंगा. मेरे को डेटा नहीं पढ़ना है, मैं उतनी इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठा कर लूंगा जो विदाउट डेटा चल रही है. मेरे को पता है डेटा किस चीज का है, डिजिटल पेमेंट, ब्ला 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 ब्ला. उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, जो इन्फरेंस काइंड ऑफ होगा, उसको मैं बाद में लूंगा. जितना पहले मुझसे बनता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है मेरे को अवेलेबल, पहले वो कर लो, बाद में डेटा वाला इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो. सिंपल. और अगर मान लो स्नैप एंड मैट में अगर ऐसा आ ही गया एकदम फालतू सा क्वेश्चन कि इन द ईयर 2020 कितने करोड़ ट्रांसफर हुए थे, मतलब
हद होगी, मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आने के चांसेस है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चेक इट एंड मार्क इट, सिंपल. बट कैट जैट आईएफटी में ऐसा नहीं आएगा. ओके, तो डेटा साइड मेरे को डेटा के ऊपर इंफरेंस भेज जाएगा, जहां पे आपको डेटा समझना पड़ेगा, फिर मार्क करना पड़ेगा, वो लेवल अलग है. वो क्वेश्चन तुम बाद में करो. तुम बोलोगे मैं डेटा भी पढ़ा, बिकॉज डेटा पढ़ के यू आर वेस्टिंग योर टाइम यार. डेटा पढ़ के तुमको वैसे भी क्या समझने वाला है. यू वांट रीड इट, यू रीड इट, यू रीड दिस, यू रीड दिस. आप ये डेटा रीड करो और समझने की कोशिश करो. रादर ये रीड जितना करोगे ना, आप भटक जाओगे. You will go away from the reading comprehension. All these are numbers, man. एक तो तुम टेक्स्ट पे चलो या तुम नंबर पे चलो, खत्म. Guys, are you with me? एक तो तुम टेक्स्ट पकड़ के चलो, सिर्फ इंफॉर्मेशन, या फिर डेटा. You want to do that? I give you 5 minutes. You want to try me out? I give you 5 minutes. You read text plus data. आप कंफ्यूज हो गए. I can guarantee you. तुम sort out कर दो just text, information and just data. You'll be much better. Yes sir, maybe mess up with it. It's going to happen. See, that's the reader's mind, you know, that's the reader's mentality. हम यहाँ पे फक अप कर देते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर जब हम कोई चीज पढ़ते हैं. This is not applicable for the avid reader. This is not applicable for the pro reader. If you're a pro reader, this is something which is not applicable to you. You will be able to manage very well. But this is something for those people who are not able to read very well, or those who do not have habit of reading on a daily basis. So we'll talk about it. आगे चलेंगे. Okay, it would do well for critics to introspect. Now, understand this. This is a very good line. Now, you will get a question on this, short question on this, because यहाँ पे author is now changing his tone. Author is now changing his entire attention, because he said India ने China को beat कर दिया. क्यों कर दिया? डिजिटल किस पे किया? डिजिटल पेमेंट्स पे किया. क्यों किया? कोरोना था. कोरोना में कन्वीनियंट था डिजिटल पेमेंट करना, पर उसका भी एक रीजन है. जनधन योजना के तहत जितने भी अकाउंट्स खुले इंडिया में, जो मोदी सरकार ने अप्लाई करा था, उसकी वजह से इसको बूस्ट मिला, राइट. और जो 3 साल पहले मोदी सरकार ने काम करा था 2020 में, वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करी इंडिया को. 3-4 साल पहले जो भी इन्होंने काम करा, डिजिटल इंडिया को पुश दो, ये करो वो करो, वो आज जाके इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प किया, which is the naked truth. Had Modi not sort of came up with this digital India and blah blah blah, we would have struggled a lot during this pandemic, man. We would have struggled a lot during this pandemic. So they have done a great job. So now here an author says that if you were criticizing Narendra Modi and BJP government whatsoever about this digital India blah blah blah, now you can kind of introspect yourself, like why did you even criticize him? Because उसने जो भी करा वो थोड़ा देर के बाद बट तुमको फायदा हुआ. So now he's changing the tone from India, China, Modi government, digital payment. He's now have gone towards the critics, right? तो अभी वहां पे भी उनके बारे में बात करेगा, right? जो भी है, because 1 billion accounts are linked to people's Aadhaar, blah blah blah, जो भी है. So it's a good thing, right? So he's now taking stand for the government, and he's not actually favoring the sort of critics, जो भी है, right? इसके ऊपर एक question short आएगा, because it's a new topic, right? कोई नई चीज है which is not in line. See, when we started the topic, we could not think of this guy talking about critics के बारे में, because एक नया point है, तो उसके ऊपर तो question बनना ही बनना है, right? And the end is going to be really important. The unmissable digital and financial revolution that has been unleashed is hard to miss for everyone. The world's largest digital and financial inclusion program of kind of held blah blah blah. ये पूरा ज्ञान होगा, नहीं करना है, मुझे नहीं पढ़ना है. This is also critical to achieving the sustainability development. पता है, reducing gender inequality, अभी ये कहाँ से आया? Especially when it comes to fighting poverty and gender inequalities, okay? Using in great TK social, the digital journey, however, is long and one hopes to see the positive trend sustaining given TK. Understood? TK. Understood? No, I did not predict the tone change. I did not predict that. जब मैं पढ़ रहा था opening, तब मुझे पता चला कि ये पैराग्राफ में क्या होगा, right? Very simple. We started with India-China comparison. Then we took India का stand, digital development के बारे में बात करा, digital payments के बारे में बात करा. उसके बाद उसने क्या-क्या चीजों ने digital payment को sort of you can say boost करा, वो सब चीजों के बारे में बात करके critics को भी उसने बीच में लाया, critics की भी उसने बैंड बजा दी, और end में उसने conclude कर दिया. The reading comprehension and read again, understand, mark that question. But जितना मैंने बोला है उतना भी करोगे तो भी आपका निकल जाएगा. चलो ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ,
जितना हमने पढ़ा और जितनी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, डू यू थिंक यू विल नॉट हैव 2 to 3 questions on it? Do you think you will not have 2 to 3 questions on it? Quickly. You will definitely, because अगर उसको निकाल दोगे तो क्या बचा फिर? उसको निकाल दोगे तो क्या बचा फिर? बात यहाँ पे यही आती है, बात वही है। आप कभी-कभी मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि यू नो सर मैं पढ़ते रहता हूँ, मैं 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते ही रहता हूँ, मेरा ध्यान नहीं लगता है। ध्यान कैसे लगेगा बेटा? तो ऐसा बैठ के पढ़ेगा, ऐसा आराम से एकदम लेन वे में पढ़ेगा तो ध्यान नहीं लगेगा। तुमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तुमको वो आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल में चीजें समझनी है और तुमको खुद को चैलेंज करना है कि यार एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ लिखूंगा मेरे फोन पे, मैं नोट्स बनाऊंगा टक 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 टक, बिकॉज ऑफ विच मुझे पता चलना है कि यहाँ पे क्या क्या आया था।